Okay, welcome back once again to all my dear students. Yesterday we had discussed about the some limitation of first law of thermodynamics, then the enthalpy, that is the formation enthalpy, as well as the combustion enthalpy and the neutralization of enthalpy, right? So all these topic which we had discussed yesterday. Now let us today we are going to discuss the example related to this all this topic, that is how to find out the change in enthalpy, that is a formation enthalpy, right? So let us start some examples. See, first of all, here the example will be given. First example, in the following reaction, the standard enthalpy of in the following reaction, the standard enthalpy of Al2O3 and Fe3O4, Al2O3 solid and Fe3O4 solid are minus 1669.4 kilojoule per mole, 0.4 kilojoule mole inverse, and minus 1117 kilojoule mole inverse, right, respectively. Okay, now what is the enthalpy change of the reaction? You have to find out what is the enthalpy change of the reaction. चलो मैं रिएक्शन लिखता हूं कि ये रिएक्शन है 8 मोल्स Al सॉलिड प्लस 3 moles Fe3O4. It will be given to you, right? Okay, 4 moles Al2O3 3 solid plus यहाँ पे 9 moles Fe solid. ये रिएक्शन दी गई है. And you have to find out the change in the enthalpy, standard change in enthalpy, right? So you know the equation to find out the standard change in enthalpy. That is, first of all, I can write down that delta H0, that is equals to what? That is total enthalpy of product, total enthalpy of products minus total enthalpy of reactant, total enthalpy of reactant. Understand? Now here यहाँ पे देखो enthalpy of product means you have to write down 4 into delta FH0, कौन सा आएगा Al2O3 plus 9 into delta FH0 Fe माइनस यहाँ पे देखो 8 इंटू डेल्टा FH0 Al प्लस 3 इंटू डेल्टा FH0 Fe3O4. Okay, right? Now put the value in this equation. So 4 into what is Al2O3, यहाँ पे दिया हुआ है कि minus 1669.4 प्लस 9 इंटू यहाँ पे Fe का क्या आएगा 0 माइनस 8 इंटू Al का 0 प्लस 3 इंटू Fe3O4 का minus 1117. Understand? So put the value, calculate it, you can get the answer. यहाँ पे क्या आएगा minus 6677.6 माइनस, और ये भी माइनस में कौन सा आएगा 3351 इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस 6677.6 माइनस माइनस प्लस 3351, right? Is it clear? Okay, now you can get the answer, that is a minus 3326.6, right, kilojoule and mole inverse. So this is the standard change in enthalpy. Understand? Write down.
Okay. Chalo. Now let us see the next example. नेक्स्ट एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है C6H6 लिक्विड C6H6 लिक्विड प्लस 7.5 O2 गैस O2 गैस गिव्स 6 CO2 गैस प्लस 3H2O लिक्विड 3H2O गैस एंड यहां पे ये एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H0 इसकी -3267.7 किलो जूल मोल इनवर्स है, राइट. In this reaction, the standard enthalpy of formation of in this reaction, the standard enthalpy of formation of CO2 and H2O of CO2 gas and H2O liquid are कौन सी दी हुई है -393.5 and 285.85 kilojoule mole inverse, right, respectively. I can write down respectively. Calculate, क्या कैलकुलेट करना है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन. Calculate standard enthalpy of formation of benzene Understand, right? Now let us see. First of all, what is delta H? I can write down delta H0, that is the total number of enthalpy of product minus reactant. So I can write down here delta F6 into delta FH0 CO2 plus 3 into delta FH0 H2O. Understand? Minus अब क्या आएगा रिएक्टेंट का डेल्टा FH0 C6H6 plus 7.5 delta FH0 O2. Understand? Right? Now put the value, you can get the answer. What is the delta? Now यहाँ पे 3267.7 equals to यहाँ पे क्या आएगा तो 6 into CO2 का क्या है तो -393.5 plus this will be what 3 into -285.85. Okay, minus this will be 0. So delta FH0 C6H6 plus 7.5 into 0. Understand or not? Right? Now calculate करो, इसका आंसर आएगा, चलो ये -3267.7 इक्वल्स टू इसका मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या है 2361 प्लस माइनस क्या आएगा इसका मल्टीप्लीकेशन 857.55 minus delta FH0 C6H6. Understand? Okay. So now you can get the answer, right? यहाँ पे क्या आएगा तो -3267.7 equals to क्या -3218.55 minus delta FH0 C6H6. Understand? And the final answer delta FH0 C6H6 that is equals to 49.15 kilojoule mole inverse. Understand? So this is how you can find out the formation enthalpy of benzene. Note down below.
ओके चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. ओके सो नाउ लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल. यहां पे एक इक्वेशन दी गई है कि C2H5OH प्लस 3 मोल्स O2 प्लस 3 moles O2 gas gives क्या आएगा twice CO2 plus 3 moles H2O liquid है, right? In this reaction the standard enthalpy of in this reaction the standard enthalpy of what? Ethanol, CO2 and H2O. Ethanol, CO2 and H2O are minus 183.35 minus 285.85, right? और सॉरी 3 यहाँ पे आएगा minus 393, right? 0.5 and last one minus 285.85 kilojoule mole inverse respectively, right? Okay, find the enthalpy of combustion of ethanol. Find the enthalpy of combustion of ethanol. चलो इथेनॉल का मुझे फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करूंगा तो चलो देखते हैं, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल नो दैट डेल्टा H0 दैट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट. सो यू ऑल नो दैट डेल्टा FH0 इक्वल्स टू 2 इनटू डेल्टा FH0 CO2 प्लस 3 इनटू डेल्टा FH0 H2O माइनस क्या आएगा डेल्टा FH0 इथेनॉल C2H5OH प्लस 3 इंटू डेल्टा FH0 O2. अंडरस्टैंड, राइट? द पुट द वैल्यू यू कैन गेट द आंसर. सी हियर यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि द स्टैंडर्ड द इथेनॉल का एंड रिस्पेक्टिवली फाइंड आउट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल, राइट? सो हाउ आई कैन फाइंड आउट द कंबशन ऑफ इथेनॉल? सो आई कैन राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल 2 into what is the carbon dioxide? Carbon dioxide का क्या आएगा यहाँ पे minus 393.5 plus 3 into H2O का क्या आएगा minus 285.85. okay, right? now this is first one completed. minus इथेनॉल का क्या आएगा तो इथेनॉल का यहाँ पे दिया हुआ है कि डेल्टा FH0 क्या दिया हुआ है तो इथेनॉल तो यहाँ पे एक ही है तो यहाँ पे दिया हुआ है minus 183.35 plus 3 into 0, right? okay, put the value you can get the answer. यहाँ पे क्या आएगा तो minus 787 then minus 857 plus 857.55, right? okay, and minus minus plus, so 185.35. is it clear? now you can get what minus 1644.55 plus what 185.35. so plus minus minus, so you can get delta FH0 that is equals to what? that is a minus 1459.20 kilojoule mole inverse. okay, and this we can say it as a the enthalpy of combustion of ethanol is this much. so this we can say enthalpy of combustion of ethanol. understand? okay, write down.
चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. Now the examples which are given in the textbook, let us see. Right, these examples are given in the textbook. So the reaction of cyanamide, the reaction of cyanamide, right, NH2Cn solid with a dioxygen was carried out in, with dioxygen is carried out in a bomb calorimeter, in a bomb calorimeter, right, and delta U was found to be, and delta U was found to be what, minus 742.77 kilojoule mole inverse at 298 Kelvin temperature, right. Calculate enthalpy change for the reaction. Calculate the enthalpy change for the reaction at 298 Kelvin temperature, right. यहाँ पे रिएक्शन दी गई है कि NH2Cn solid plus 3/2 O2 gas gives N2 gas plus CO2 gas plus H2O liquid. अंडरस्टैंड. तो पहले तो यहाँ पे मुझे डेल्टा यू दिया गया है कि डेल्टा यू देयर इज अ चेंज इन द इंटरनल एनर्जी minus 742.7 किलो जूल मोल इनवर्स. मुझे क्या फाइंड आउट करना है? तो एंथैल्पी. तो आई नो दैट इक्वेशन डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, राइट. In this equation, put the value, you can get the answer. What is the delta n? See, whenever you write down here kilojoule is given. So first step, that if you want your answer in the kilojoule, then whenever you take the gas constant, then it is 8.314 into 10 raised to minus 3 kilo joule into mole inverse and Kelvin inverse. So these things also you have to take in the kilojoule. These things you have to remember. Now your first step, that you have to find out delta Ng. What is delta Ng? That is a Np minus Nr. What is the product of gas? 2 minus 3/2. So यहाँ पे 1, तो ये 4 minus 3 divided by 2, so that is equals to 1/2. So put the value over here, you can get the delta H. What is delta U? Minus 742.7 plus 1/2 into 8.314 into 10 raised to minus 3 into 298. ओके, चलो इसका कैलकुलेशन करो. minus 742.7 तो सही, फिर बाद में प्लस 1.2. So what is answer? 741.5 kilojoule mole inverse. So this is delta H. This is a change in the enthalpy. Okay, चलो नोट डाउन कर लो. ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. Calculate the standard enthalpy of formation. Calculate the
standard enthalpy of formation, right, of ethanol or methanol CH3OH, right, from the following data. From the following data. चलो देखते हैं. यहाँ पे CH3OH, it will be in the form of liquid, plus 3/2 O2 gas gives what? CO2 plus H2O liquid. Understand? तो ये इसको बैलेंस करो. चलो ये रिएक्शन है एंड यहाँ पे इस रिएक्शन की फॉर्मेशन एंथैल्पी दी गई है कितनी? -726 किलो जूल मोल इनवर्स. दूसरी रिएक्शन दी गई है कि कार्बन it will be in the form of graphite, right? When it is burned in the form of oxygen, then you can get the carbon dioxide only, right? But यहाँ पे फॉर्मेशन एंथैल्पी दी गई है कार्बन डाइऑक्साइड की -393 किलो जूल एंड मोल इनवर्स, राइट? एंड लास्ट वन इज अ हाइड्रोजन. चलो हाइड्रोजन will be bound in the presence of O2, then you can get 1/2 O2, so I can get H2O. so इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी दी गई है यहाँ पे 286 -286 किलो जूल मोल इनवर्स. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट? इसकी CH3OH की फॉर्मेशन एंथैल्पी मुझे फाइंड आउट करनी है. तो कैसे? तो डेल्टा FH0 दैट इज इक्वल्स टू, इसमें से मैं लिख सकता हूं कि C डेल्टा FH0 CO2 प्लस 2 इंटू डेल्टा FH0 H2O माइनस डेल्टा FH0 CH3OH प्लस 3/2 डेल्टा FH0 O2. इसका तो जीरो आएगा. चलो इसकी वैल्यू कितनी है? तो -726 दैट इज इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है? तो -393 प्लस 2 इंटू वाटर की -286 एंड माइनस डेल्टा FH0 CH3OH प्लस 3/2 इंटू 0. अंडरस्टैंड? पुट यहाँ पे 726 एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस, ये क्या आएगा? -572, राइट? -393 एंड फिर माइनस व्हाट? डेल्टा FH0 CH3 and OH. So thus you can get what the answer? That is the delta FH0 formation enthalpy of methanol, that is equals to -239 kilojoule and mole inverse. Understand? So this is how you can find out the formation enthalpy. Okay, चलो note down कर लो. चलो लास्ट एग्जांपल देखते हैं. enthalpy of formation of
of formation of CO gas, CO2 gas, CO2 gas, then N2O gas and N2O4 gas are -110, -393, -81, sorry, +81, and last one, that is a 9.7 kilojoule respectively, mole inverse respectively, right? Find the value of delta FH0. Find the value of delta formation enthalpy for the reaction. चलो रिएक्शन लिखते हैं कि N2O4 गैस है प्लस 3CO गैस है. It will be given in the exam, right? So N2O4 and plus what 3 mole CO2. अभी यहाँ पे देखो कि directly you can find out the what delta FH0, that is equals to what I can write down here 1 into delta FH0 N2O4 plus 3 into delta FH0 CO2 minus delta FH0 N2O4 यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है. N2O ही आएगा ना. 6 plus 4 10 3 4 yes 10 N2O ही आएगा यहाँ पे. चलो ठीक है ना. तो यहाँ पे N2O and यहाँ पे N2O4 plus 3 into delta FH0 CO. Right, put the value, you can get the answer. चलो N2O का कितना है? तो N2O (81), CO2 का कितना है? तो -393, N2O4 का कितना है? 9.7, CO का कितना है? -110. Thus calculate it, you can get the answer, right? It will be kilojoule and mole inverse. So this is how you can find out the change in enthalpy. Any example will be given, then how to find out the change in the enthalpy or formation enthalpy or combustion enthalpy, you can find out this way. Okay, so up to here it's enough. In the next video we are going to discuss about the second law of thermodynamics. Okay, so thank you very much.